Hello students, today we are going to learn a new topic from our third section, and the fifth topic is drafting a virtual message. What is virtual message? The message which is sent through various fast media like WhatsApp, email or other means of communication. Virtual means not real, not physical. मित्रांनो, आजच्या ह्या व्हॉट्सॲपच्या, इंटरनेटच्या, ईमेलच्या जमान्यामध्ये आपण मेसेज पाठवताना किंवा लेटर पाठवताना प्रत्यक्ष पोस्टात जाऊ शकत नाही, जाण्याची गरज नाही. एका सेकंदात जगातील कोणत्याही कोपऱ्यावर कोणत्याही देशात असलेल्या व्यक्तीला आपण मेसेज पाठवू शकतो. तो आभासी मेसेज असतो. आय एम टेकिंग युअर लेक्चर, दिस इज ऑल्सो व्हर्च्युअल लेक्चर, बट यू फील दॅट आय एम सिटिंग in front of the students. I am taking lecture. The blackboard, that is green board, is behind me, but actually this is a virtual lecture. What is virtual message? Virtual message is used for communication. Communication means exchange of ideas, thoughts and information from one person to another. It is oral, written or virtual. And then message, it is an informal means of communication. We send this message from one person to another by using internet and various modes of communication using internet. So virtual message is a mode of communication that includes the use of technology, audio and video to communicate with people at long distances. हम हमारे घर में बैठकर एक सेकंड में या विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हम दूसरों को मैसेज भेज सकते हैं, हमारे दोस्तों को, हमारे रिलेटिव को, जो लोग हमसे बहुत दूर है. There are various types of messages, and the first is positive message. Positive messages convey good feelings through thanks, appreciation, expression of interest, sympathy, extended help, solace, etc. But there are also negative messages. They convey disappointment, disapproval, dissatisfaction, disagreement, denial, रिफ्यूज़ल, कैंसलेशन. कुछ मैसेजेस ऐसे हैं, विशेषतः ये बिजनेस मैसेजेस है. हमने किसी प्रोडक्ट का ऑर्डर किया लेकिन प्रोडक्ट अच्छा नहीं है. इन ऑर्डर टू मेक द कंप्लेंट अबाउट द प्रोडक्ट वी सेंड नेगेटिव मैसेज और मैसेज ऑफ डिसअप्रूवल, डिससेटिस्फैक्शन. Some messages are neutral, means they are neither negative nor positive. So no feelings, no emotions, no sentiments. They are called dry messages, or messages showing neither joy nor sorrow, and messages that do not draw any conclusion. Such messages is called neutral messages. Then some messages are persuasive. कुछ ऐसे messages रहते हैं की समोरच्या व्यक्तीचं मन वळवण्यासाठी, त्या व्यक्तीला पटवून देण्यासाठी मेसेजेस पाठवले जातात. सच मेसेजेस आर कॉल्ड परस्युएसिव्ह मेसेजेस. दीज मेसेजेस ॲक्ट दॅट कम्युनिकेट परस्युएसिव्हली, ॲग्रीमेंट ऑन द रायटर्स पॉईंट ऑफ व्ह्यू, यूज ऑफ कन्व्हिन्सिंग लँग्वेज ऑर वर्ड्स. Directional messages, what you should do, give us a point of view to achieve a certain goal. These messages give us point of view to achieve our goal. Some messages are messages of possibility. It says something else is possible.
Again, the messages of reality. It says how things really are. They are based on reality. Then messages of necessity. How these messages are very important. Suppose you want to order any product, we say we need to buy your or purchase your product. Such type of messages are called messages of necessity. A call to arms for people. What's possible, what's real, and what's required for us to get what we want. These messages are called messages of necessity. New idea messages are also there. About novel ideas, opinions, suggestions, views, etc. are sent with excitement or enthusiasm. Then reframing messages about taking aspects of our life from our weakness or bad and frame them as strengths and assets. But actually in our exam very few messages will be asked. Reframing messages is a rare kind of message. Something we thought was bad is actually good. हम कभी किसी प्रोडक्ट को परचेस करते हैं, बाद में पता चलता है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, तो वी राइट सच टाइप ऑफ मैसेजेस. समथिंग वी ऑलवेज थॉट गुड इज बैड, समथिंग वी थॉट वाज अगली इज एक्चुअली ब्यूटीफुल. ऐसे मैसेजेस को हम भेज सकते हैं. पहले डिसअप्रूवल का मैसेज भेज दिया, बाद में पता चलता है वो प्रोडक्ट अच्छा है, तो हम रीफ्रेम करके मैसेज भेजते हैं. These are reframing messages. Now, what should your message contain? Format of virtual message. This is most important. Please take down all these points in your notebook. First is date. The date on which you are sending the message. Date should be mentioned. Then time of the message should be there. Name of a person to whom the message is directed. हम किसको मैसेज भेज रही है. रिसीवर ऑफ द मैसेज इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. देन मेन कंटेंट और बॉडी ऑफ द मैसेज. मैसेज में आप क्या लिख रहे हैं वो मेन मैसेज और बॉडी ऑफ द मैसेज. एंड नेम ऑफ द राइटर और सेंडर. आपका खुद का नाम उसमें आना चाहिए. सो डेट, टाइम, नेम ऑफ द पर्सन दैट इज रिसीवर एंड सेंडर. दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स in the format of virtual messages. Here is one example we are going to see this. Example, you receive a telephone call from your mother's office when she is not at home. You have the following conversation with the speaker, but you have to go for your tuition class, so you leave a message for your mother. Write the message within 50 words using the information given below. Do not add any new information. इधर आपको क्या करना है. सब जो आप घर पे है, आपकी मदर नहीं है, you are alone at home. Somebody calls your mother from office. मदर आई मतलब आईच्या ऑफिसमधून कोणीतरी कॉल करतं. आई घरी नाही आहे आणि ती व्यक्ती आईसाठी मेसेज देऊ इच्छिते, पण तुम्हाला ट्युशन क्लासला जायचं आहे. जेव्हा आई येईल, आईसाठी तुम्ही तो मेसेज लिहून जातील की त्या व्यक्तीने आईच्या ऑफिसमधून फोन केला होता आणि आईला काय मेसेज दिला. हिअर अंबुज, हॅलो मिस्टर रस्तोगी, हॅलो मे आय स्पीक टू मिस दीक्षित प्लीज. आय एम नरेश रस्तोगी फ्रॉम द ऑफिस. अंबुज, मॉम इज नॉट एट होम राइट नाउ. Mr. Rastogi, in that case, you can give her a message. It is urgent. Please tell her that the meeting fixed for tomorrow has been rescheduled. Ask her to check her mail as soon as possible for details. Please don't forget to inform her. Then Ambuj, don't worry. I'll tell her as soon as she returns. 14 February 3:30 p.m. अभी ये पूरा जो डायलॉग है आपके बीच में, अंबुज और मिस्टर रस्तोगी के बीच में, वट एवर मिस्टर रस्तोगी टेल्स, यू आर कन्वर्टिंग दिस इनटू मैसेज टू योर मदर बिकॉज योर मदर इज नॉट एट होम एंड यू हैव टू रश फॉर ट्यूशन क्लासेस. तो आप मैसेज कैसा बना इधर, मॉम, मिस्टर रस्तोगी फ्रॉम द ऑफिस called up to say that
The meeting fixed for tomorrow has been rescheduled. He wants you to check your mail as soon as possible for the details. He said it was urgent. Ambuj. So receiver's name, content of the message, and sender of the message. So this is an example of message given in our textbook. In our exam also such type of dialogue will be given, hints will be given, and with the help of these dialogues and hints you will have to draft a virtual message. So this is a virtual message ज्याला आपण आभासी म्हणतो. हॅव अ नाईस डे. डेफिनेटली you have understood it. If you have not understood, please watch this video again. Please like this video and subscribe my channel so that you will get new notifications when I upload my new videos. Bye bye. Have a nice